वेलकम टू न्यूज 18। हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़े हैं जो इंग्लिश में लिखते हैं, ऑथर हैं, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। अमिताभ घोष हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत से लोग उनका नाम जानते हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, फिक्शन भी लिख चुके हैं, नॉन फिक्शन भी लिखते हैं। आजकल क्लाइमेट चेंज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्लाइमेट इमरजेंसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। उनकी लेटेस्ट बुक द नटमेग्स कर्स भी इसी सब्जेक्ट पर है, क्लाइमेट चेंज पर। और वो क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से समझते हैं, इसके रीजंस क्या समझते हैं कि इस मौके पर हम इस इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं, या जिस तरीके से ये अनफोल्ड हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किस तरीके से उसको समझते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। तो आप फिक्शन ज्यादा लिखते रहे हैं इससे पहले, बट लेटली यू हैव टर्न टू नॉन फिक्शन और ज्यादा आप क्लाइमेट चेंज पे लिख रहे हैं। और जैसे आप बहुत सारे इंटरव्यूज में, बहुत सारे आर्टिकल्स में भी आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप क्लाइमेट चेंज को कॉलोनियलिज्म के साथ जोड़कर देखते हैं। तो आपका इसके बारे में नजरिया क्या है, या इस पर आपकी रिसर्च क्या कुछ कहती है? देखिए, क्लाइमेट चेंज अब देख सकते हैं। अब जब ये जो बहुत बड़ा फ्लड्स हुआ है पाकिस्तान में, इसके पीछे तो एकदम कॉलोनियलिज्म ही है। कॉलोनियलिज्म पुराना ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म सिर्फ नहीं, अमेरिकन कॉलोनियलिज्म ऑफ द 60s एंड 70s ऑल्सो। कारण वहां जो बहुत बड़े सब डैम्स बने थे, कैनाल्स, इरिगेशन सिस्टम्स वगैरह, वो सारे तो 1960s 70s वर्ल्ड बैंक से बना है। और अब वो सारी चीजें हम देख रहे हैं कि एकदम दे आर जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल। दे आर क्रिएटिंग दीज अनकंट्रोलेबल फ्लड्स। 1/3 of Pakistan was below water, you know. What is it, something like 50 million people. और ये भी हम जानते हैं कि ये सारे डिजास्टर्स यहाँ भी आएंगे। ये भी हम जानते हैं कि देखिए, यहाँ जो पंजाब में, नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल डिजास्टर अब जेस्टेट कर रहा है, क्योंकि हमारे ग्राउंड वाटर्स यहाँ खत्म हो गया है। अपर गंगा एक्विफर फीड्स 300 मिलियन पीपल, लेकिन अपर गंगा एक्विफर नाउ इज एग्जॉस्टेड। पानी नहीं है। तो पानी नहीं रहने से एग्रीकल्चर कैसे होगा? और एग्रीकल्चर जब हो नहीं पाएगा, लोग तो यहाँ से दे विल एस्केप, जो अब कर रहे हैं। बहुत सारे माइग्रेंट्स आप देखेंगे यूरोप में, अमेरिका में, बस दे आर क्लाइमेट रेफ्यूजीज एसेंशियली। तो जैसे आपने बात की कि हम एग्जॉस्ट कर चुके हैं काफी सारे रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, और एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे पंजाब में खास करके हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर की वजह से, खास करके पैडी की वजह से, बहुत सारा जो ग्राउंड वाटर है वो एग्जॉस्ट हो रहा है। तो इज इट द ओनली रीजन, या फिर इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है जो इसका रीजन है? लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फार्मर्स, तो यूजुअली उनको कहा जाता है कि आप इसका बदल दें, या फिर आप दूसरी फसलें उगाएं। वो एमएसपी डिमांड करते हैं। आपको लगता है कि सिर्फ उस एग्रीकल्चर की वजह से ग्राउंड वाटर यहाँ पे, खास करके अगर पंजाब की बात करें, कि उसकी वजह से एग्जॉस्ट हो रहा है, या फिर उसके पीछे और रीजंस पहले रहे हैं? देखिए, पंजाब में पैडी का कल्टीवेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि पुराने जमाने में तो नहीं होता था। पैडी आता था बंगाल से, उड़ीसा से, जहां बहुत मानसून होता है वगैरह। पंजाब हैज ऑलवेज बीन अ वाटर स्ट्रेस्ड रीजन। व्हाई इन अ वाटर स्ट्रेस्ड रीजन विल यू ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स? और ये महाराष्ट्र में भी देखा जा रहा है कि कॉटन, विच इज इनक्रेडिबली वाटर इंटेंसिव, is being grown in areas like Latur, you know, which now has been out of water for several years. So I think these are all mistaken policies that used to be called development. You know, now we can see instead of development, we should find some other word where we talk about disaster making. All these policies are now, we can now see them to be recipes for disaster. But it is also said at the same time कि उस समय पर भारत को जरूरत थी ऐसी फसलों की या फिर अनाज उगाने की, और उस टाइम पे ऐसी पॉलिसीज लाई गई which were thought to be very good. Actually, the new research on this shows that this is not the case. Actually, even when they felt that there was a huge food deficit that needed to be met, and the Green Revolution was brought in on those pretexts,
In fact, new research shows that this was not the case. It was mainly just propaganda for putting in the Green Revolution, for creating, huge demands for fertilizer, for industrial inputs of various kinds. And when we are talking about fertilizer, what you're really talking about is fossil fuel dependency. So we are now completely dependent on fossil fuels for our food. So in all these ways, we've been sowing a recipe for disaster. लेकिन वो सबसे भी खराब एक और चीज है कि subsidized electricity. So for many farmers, actually because of the water pumps, Kirloskar water pumps, they just sit there pumping up water. This is happening across India. But this is fossil water which takes millions of years to recharge the aquifer. And now you're literally paying people to just pump up that water. What sense does that make? You also talk about this happening before also, like you just said कि अभी जैसे industrialization लाया गया या आप बात कर रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे भी यही चीज़ें हुई, तो आप उससे पहले की भी बातें करते हैं, आप कॉलोनियलिज्म की भी बात करते हैं कि उस टाइम भी ये सोचा एक माइनॉरिटी ने कि वी आर बेटर देन अदर्स और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर ला रहे हैं जहाँ के लोगों को इसकी समझ नहीं है. देखिए पंजाब में ये जो बहुत सारे इरिगेशन सिस्टम्स है, जो कनाल्स हैं वगैरह, वो क्यों हैं? अंग्रेजों ने बनाया था ये पूरा चीज क्योंकि they wanted to keep the Punjabi soldiers happy. That was the whole point. The British Indian Army was, very largely, I think 50% of it was from the Punjab. Half Sikhs and Hindus and half Muslims. And I think that is really, in some sense, the beginning of the disaster, because they created these huge irrigation systems, essentially to keep the Punjabi soldiers in hand. For that, say, for example, in Pakistan, these floods, they literally gave the land to a certain group of aristocrats, who basically created a system of serfdom. They had tens of thousands of acres. I have friends who still have, tens of thousands of acres over there. They forced, nomadic populations to settle by the canals. Well, now when the canals flood, who are the first people to be hit? They are the agricultural laborers who were forced to settle there. So behind all of this, we can see very clearly these patterns of agriculture, settlement, development that were directly traceable to the colonial period. The real tragedy of it is that before 1857, the British Indian Army was mainly Bihari. But because the Biharis rebelled in 1857, they then began to employ mainly Punjabis. And all those benefits came to Punjab, You just said कि अंग्रेज़ों ने कैनाल सिस्टम पंजाबियों को खुश रखने के लिए एक तरीके से बनाया. आफ्टर 1947 इंडस वाटर ट्रीटी होता है. उस टाइम पे आई वाज रीडिंग सम डॉक्यूमेंट्स के हमने उस ट्रीटी में अपना, क्योंकि ये बताना था कि हम कितना वाटर यूटिलाइज कर पाएंगे तभी वो ट्रीटी में आएगा, तो हमने उतना वाटर यूटिलाइज करने का प्लान बनाया जितना हमारे पास नहीं था या उसको यूटिलाइज करने के रिसोर्सेज नहीं थे. और अब हम जब बात करते हैं तो पंजाब का स्टैंड हमेशा यही होता है कि वी डोंट हैव एनी वाटर, एनी सरप्लस वाटर व्हेन इट कम्स टू SYL, जो अभी भी इस वक्त भी इज अ पॉलिटिकल इशू. अभी भी उसको लेकर मीटिंग्स हो रही हैं. सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट टू होल्ड अ मीटिंग एंड रिजॉल्व दिस इशू. बट व्हेन वी कम टू द रियलिटी ऑफ द इशू, तो वो पानी नहीं है. तो ये भी पॉलिटिकली इशू क्रिएट किया गया. हाँ, एकदम. But I think with the Indus Waters Treaty, we have to recognize that it's not negotiable. I mean, after long negotiations, both sides came to the treaty, and at this point, I think it would be impossible to change the treaty without a war. Because Pakistan is completely dependent on the Indus, even more than Punjab is dependent on the rivers. Pakistan is even more so. So, it's for all these reasons that I'm saying that we are
we have created all the conditions for an environmental catastrophe, and on top of that there's climate change. You know, so from all these directions we see that there are converging catastrophes, you know. Another thing is, of course, this addiction catastrophe that you are seeing. So, is only the Indus Water Treaty after partition had a role in it, या partition का कोई और भी role है इस सब को लेकर? हाँ, पार्टीशन के तो बहुत सारे रोल्स हैं इसमें, लेकिन पूरा चीज तो पार्टीशन तक ट्रेस नहीं कर पाएंगे हम, because a lot of the groundwork for this was also laid before partition. You know, I mean, in the 1920s, 30s, many of the canal systems were created just then, and they were thought to be the ideal model for creating agricultural systems. But now we can see that actually those systems take away a lot of local forms of resiliency. You know, in the Punjab, as in other parts of India, there were always canal systems, there were always, you know, tanks and so on. Once people started pumping up groundwater, those systems fell into complete disuse, you know. So I think what we have to do is stop completely the pumping up of groundwater, but that will never happen. Because you can't take away the subsidies on electricity. The farmers won't stand for it. Do you see a solution when it comes to India? जिस तरीके का climate change हो रहा है, although you are writing about the whole world or earth for that matter, but India में जिस तरीके की problems है, जैसे हम पंजाब का भी discuss कर रहे हैं, तो do you see a solution? I think it's simplistic to think of such a thing as a single solution. At this point, you know, there are two things we can do. One is, of course, to talk about reducing greenhouse gases on the aggregate. And that's something that should be done, and negotiations should exist for that. The other is creating resilience, you know, and taking away fragility. And there are many ways we can look at that, you know, many different ways. So, for example, if you take a city like Bombay, it's incredibly fragile, you know. If Bombay were to be hit by a major cyclone, the consequences would be inconceivable, you know, and it's going to happen. So there should be planning for that, there should be some sort of mitigation measures, there should be some attention to resiliency. और ये सारी चीज बहुत अहम है. तो ये नहीं हो रहा है जो नहीं, एकदम नहीं हो रहा. मैं बोल सकता हूँ कि एकदम ऑपोजिट हो रहा है. बॉम्बे में देखिए, the real estate prices are highest in the most vulnerable areas, कफ परेड इत्यादि. तो यही तो है ना प्रॉब्लम कि सिर्फ बॉम्बे में नहीं, मायामी में भी ऐसा ही हो रहा है. तो ऐसे ही चल रहा है. You were also talking about it in your session, and you actually made a point that about war and about defense-related activity. कि डिफेंस-related activity सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस emission करती है, तो उसके related कोई solution आप देख रहे हैं या इस पर कोई सोचा भी जा रहा है? एकदम उल्टा. देखिए, अब जर्मनी तो रीमिलिटराइज कर रहा है, जापान भी. No, I think what we are seeing is a multidimensional catastrophe, you know. I mean, Germany has diverted funds away from climate mitigation into, you know, into defense expenditure. So on every front, I mean, if we are honest, we'll acknowledge that this is going in absolutely the wrong direction. अब छोड़ दीजिए मुझे. जी जी. तो ये थे अमिताभ घोष, जो सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, पॉलिटिक्स के बारे में भी बहुत लिखते हैं और क्लाइमेट चेंज पर खास करके बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, जो आजकल उस तरीके से लिखा नहीं जा रहा है इस इशू पर या बोला नहीं जा रहा. तो उसी के बारे में हमने बात की है, खास करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में. शुक्रिया.